लास्ट सेशन में हमने कस्टमर डाउन पेमेंट्स का टॉपिक कंप्लीट किया था। अब इस सेशन में हम टैक्स ऑन सेल्स का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। हमने कंसेप्चुअली देखा था कि सेल्स पर टैक्स कैसे लगता है। हमने अकाउंटिंग एंट्रीज समझी थी। जब हम कंसेप्ट समझ रहे थे, हमने दो तरीके के टैक्सेस देखे थे। वन इज इंट्रास्टेट, वन इज इंटरस्टेट। Intrastate has CGST and SGST. Interstate has IGST. अब what we will do is we will create some tax codes. जब हमने अकाउंट्स पेएबल का टॉपिक देखा था, तब हमने सिर्फ एक टैक्स कोड क्रिएट किया था, which was 18% for input tax. Now for output tax, we also call it as sales tax. We will create tax codes for 18% हमने ऑलरेडी क्रिएट किया है. We will create 12% and we will create 40%. हमारे पास चार तरीके के टैक्स टाइप्स हैं. फर्स्ट इज CGST, second is SGST, third is IGST and fourth is UGST. All these belongs to output tax and this output tax is a liability because ये output tax eventually हमें गवर्नमेंट को देना होता है. So till we give this tax to the government, the output tax will remain our liability. हमने आउटपुट टैक्स में ऑलरेडी 9% CGST, 9% SGST, 18% IGST एंड 18% UGST डिफाइन किया है. Now, what we will do is we will add two more tax percentages. For that, हम number ranges define कर रहे हैं. Output tax के लिए the number range which we are using is 251 all zeros. हम हर एक टैक्स टाइप के लिए 10 GL अकाउंट्स अलॉट कर रहे हैं. For CGST we are using 251 all zeros to 251 all zeros 9. For SGST again 251 all zeros 19 to 251 all zeros, I'm sorry, 251 all zeros 10 to 251 all zeros 19. Next 251 all zeros 20 to 251 all zeros 29. And for UGST 251 all zeros 30 to 251 all zeros 39. Now what we will do is for 18%, let us see what tax code we created.
B1 was created as input tax. इसमें हमने CGST 9% and SGST 9% लिया था. And E1 was created for output tax. यहाँ पे भी हमने CGST 9% and SGST 9% लिया था. Now let us see कि हम E1 के बाद E2, E3 and E4 create कर सकते हैं क्या? Let us go to SAP. The transaction code to create the tax codes is FTXP. Add your country and continue. Now for the country India, कुछ tax codes define किए होंगे. See, these are the tax code which is defined. But before this, one more thing we need to check is जो हम tax procedure use कर रहे हैं वो country को assign है या नहीं. Go to transaction OBBG. Search for the country. The tax procedure which we are using is tax IIN. So this is fine. Back to the tax codes. अब यहाँ पे हमने E1 define किया था for output tax. If I select this and if I press enter, CGST for sales was 9%. SGST for sales was also 9%. Now what we will do is, I'll just remove this input tax. We will create tax code E2 for output tax. In this, we will take CGST as 6% and SGST as 6% because हम tax code create कर रहे हैं for 12%. So this will include CGST plus SGST, 6% each. And we will create E3 for output tax again. In this as well, CGST 20% and SGST 20%. So 20 plus 20 is 40%. Go back to SAP. Back. यहाँ पे enter the tax code which you want to create. Now we want to create E2. This is for output tax, CGST 6%, SGST also 6%. Select the tax type. Tax type A is for output tax and V is for input tax. Select output tax. Continue. अब यहाँ पे in CGST for sales, enter 6
and in SGST for sales also enter 6. जब आप IGST के लिए 12% डिफाइन कर रहे होंगे तो यू विल क्रिएट अ न्यू टैक्स कोड जहां पे आप IGST के लिए 12% एंटर करोगे. बट फॉर नाउ वी आर जस्ट क्रिएटिंग CGST एंड SGST. क्लियर है ये? हाँ सर. ओके. प्रेस एंटर and save. Next, we are creating E3. Enter again. Output tax CGST. This will be 20% and SGST also 20%. Tax type will be A. Click on continue. अब यहाँ पे भी CGST for sales will be 20. SGST for sales will be 20. Enter and save. Now, let us go to the customer invoice FB70. Our company code is HNMO. Customer, let's say Aero Honda Service Center. Amount 10,000 rupees. Invoice date is 04/10/2025. Let's say this is customer invoice for 12% CGST plus SGST. This is also 10,000. Click on calculate tax before going to this part. अगर आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे, सी ये सारे टैक्स कोड्स हमने क्रिएट किए थे, E1, E2 and E3. Now we are taking 12%. So click on it. This is 12%. Ab, if you see here, this is tax code. हमने GL अकाउंट एंटर किया एंड उसके बाद हमने कैलकुलेट टैक्स एंड ये ड्रॉप डाउन वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया. सो व्हाट हैपेंड इज बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कोई टैक्स कोड ऐड नहीं हुआ है. अब हम देखते हैं कि इफ वी ट्राई टू पोस्ट इन दिस वे व्हाट विल हैपन. I'll simulate. Tax code E2 does not appear in any GL account item. Press enter. अब फॉर द कस्टमर टैक्स कोड दिख रहा है, लेकिन फॉर डोमेस्टिक सेल्स आगरा सेल्स अकाउंट के लिए we are not able to see the tax code. Let us go back. Okay. Let us enter the tax code here. Generally what you have to do is इस एरिया में आने से पहले ही you have to select this calculate tax and from the drop down आप जो भी relevant tax code होगा उसको select करोगे. अगर अभी हम simulate करते हैं, account is not tax relevant, tax code will be ignored. Open a new screen. अब if you expand this, there is nothing. SAP हमें ये बोल रहा है कि जो डोमेस्टिक सेल्स फॉर आगरा वाला अकाउंट है उसमें हमने डिफाइन नहीं किया है कि इस अकाउंट पे टैक्स
अप्लाई हो सकता है। ये हम कहाँ पे डिफाइन करते हैं? इन द जीएल मास्टर डेटा। हम एक नई स्क्रीन ओपन करते हैं। गो टू FS00, एंटर, चेक फॉर योर कंपनी कोड HNMO, कंटिन्यू। हमने डोमेस्टिक सेल्स वाले अकाउंट में सेल्स फॉर आगरा का अकाउंट डिफाइन किया था। क्लिक ऑन दिस अकाउंट नेम, go to this pencil icon, change. कंट्रोल डेटा टैब में अगर देखो, we have tax category and we have posting without tax allowed. In the tax category, what we will do, we will give this as either output tax or either all tax type allowed. हम all tax type allowed यूज कर रहे हैं एंड मेक श्योर कि आप posting without tax allowed पे क्लिक करो। This is because if in case you want to post invoice without tax, तो आप वो भी कर पाओगे। अब इसको सेव करो। Sales tax code has been changed. Please check. It's fine. Click on continue. Data saved. अब back to customer invoice and press enter. Again it is showing same thing. हम फिर से इस transaction code पे आते हैं, FB70. Customer is 800301. और what we will do, हम जो amount है we will take it as 112000 और 00. Okay. This is CGST plus SGST 12%. Click on calculate tax एंड यहाँ से आपका टैक्स कोड सिलेक्ट करो, E2, GL account 301, all zeros. This is again 11200. अब अगर यहाँ पे देखो तो टैक्स कोड ऑटोमेटिकली आ गया। कॉपी दिस टेक्स्ट एंड इस टेक्स्ट को यहाँ पे पेस्ट कर दो। क्लिक ऑन सिम्युलेट। पोस्टिंग इज ओनली पॉसिबल विथ जीरो बैलेंस, करेक्ट द डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे हमें डिफरेंस आ रहा है ऑफ ₹1344. Why is this difference? क्लिक ऑन एडिट ऑप्शंस एंड यहाँ पे इस इंडिकेटर को डी सिलेक्ट करो एंड क्लिक ऑन ओके, नॉट क्लिक ऑन सेव, गो बैक। अब ये ग्रीन हो गया। अब इसको सिमुलेट करते हैं। इतना समझ आया? सर कॉल ड्रॉप डाउन हुआ था वो टैक्स जब आपने एंटर किया कर रहे थे ना वो टाइम। टैक्स कोड जब एंटर कर रहे थे तब? यस सर, ओके D2 का बात है। ओके। वाइल पोस्टिंग द इनवॉइस हम नॉर्मल जो डिटेल्स फिल करते हैं वही डिटेल्स फिल करेंगे। जस्ट बिकॉज हमें टैक्स कैलकुलेट करना है, वी विल सिलेक्ट दिस कैलकुलेट टैक्स इंडिकेटर एंड ड्रॉप डाउन से हम जो भी रेलिवेंट टैक्स कोड है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। देन एंटर GL अकाउंट, अमाउंट एंड टेक्स्ट। अगर आप इस वाले पार्ट में जाने से पहले ही कैलकुलेट टैक्स एंड टैक्स कोड सिलेक्ट कर लोगे तो यहाँ पे जो E2 आ रहा है टैक्स कोड वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आपको मैन्युअल एंटर करने की जरूरत नहीं है।
इसके बाद अगर आप पोस्ट करने के लिए ट्राई करोगे, अगर आप पोस्ट करने के लिए ट्राई करोगे तो यहाँ पे बैलेंस में आपको 1344 बैलेंस दिखाएगा विथ दिस रेड इंडिकेटर, बैलेंस नॉट इक्वल टू जीरो। अब कोई भी इनवॉइस पोस्ट करने के लिए द डेबिट बैलेंस शुड बी इक्वल टू द क्रेडिट बैलेंस। अगर आप इसको सिमुलेट करोगे, it is showing that posting is only possible with zero balance. Correct the document. हम एडिटिंग ऑप्शंस पे जाएंगे एंड वी विल रिमूव दिस इंडिकेटर, कैलकुलेट टैक्सेस ऑन नेट अमाउंट। इसको हम डीसिलेक्ट कर देंगे। गो बैक। अब बैलेंस जीरो दिखा रहा है एंड इंडिकेटर ऑल्सो इट टर्न्ड टू ग्रीन। अब हम इसको सिमुलेट करते हैं। इट इज शोइंग ट्रांजैक्शन की YOC चार्ट ऑफ अकाउंट्स HNMO not defined in table T030R. Okay, let's see. टैक्स कोड की जो असाइनमेंट्स रहते हैं GL अकाउंट्स के साथ, वो हम करते हैं इन द ट्रांजैक्शन कोड OB40। हमने लास्ट सेशन में ये देखा था, हमारे पास कुछ ट्रांजैक्शन कीज होते हैं। YOC, दिस इज फॉर आउटपुट CGST। YOS is for output SGST. O stands for output, C stands for CGST, S stands for IGST. Then YOI and YOU. This is transactions. Let us go to OB40. यहाँ पे you will see description. This is transaction and this is account determination. अब हमें transaction check करना है। See, this is CGST for purchase, YIC. I stands for input, C stands for CGST. अब हमें output के लिए चाहिए। So this is for output. CGST sales, YOC. If you go in this transaction, आपको आपका चार्ट ऑफ अकाउंट्स पूछेगा। एंटर द चार्ट ऑफ अकाउंट्स एंड क्लिक ऑन कंटिन्यू। अब यहाँ पे वी हैव दिस ऑप्शन टैक्स कोड। फर्स्ट हम इसको सिलेक्ट नहीं करते हैं एंड लेट्स सी कि हमें क्या इंटरफेस मिलेगा। सेव दिस। यहाँ पर सिर्फ अकाउंट वाला कॉलम आ रहा है। नाउ व्हाट वी वांट टू डू इज, हमें 3 GL अकाउंट्स चाहिए, राइट? वन फॉर 18% टैक्स, सेकंड फॉर 12% टैक्स एंड फॉर थर्ड फॉर 40% टैक्स। अब अगर हम यहाँ पे सिर्फ अकाउंट्स डिफाइन करेंगे तो एसएपी को हम ये नहीं बता पाएंगे कि कौन से टैक्स कोड के लिए कौन सा GL अकाउंट अपडेट होना चाहिए। सो व्हाट वी विल डू इज वी विल गो इन रूल्स टैब एंड हम इस टैक्स कोड इंडिकेटर को सिलेक्ट करेंगे। नाउ गो बैक टू, ओके, फर्स्ट सेव। अब वी हैव टैक्स कोड, वी हैव अकाउंट। अब our tax code for 18%, let us check FS00। ओके, आउटपुट टैक्सेस हमने डिफाइन नहीं किया, नो प्रॉब्लम।
टैक्स कोड जीएल अकाउंट्स को असाइन करने के लिए पहले हमें आउटपुट टैक्स अकाउंट्स क्रिएट करने पड़ेंगे। सो गो टू जीएल मास्टर डेटा, click on create. GL account number starts with 251, all zeros. Click on continue. GL account type क्या आना चाहिए? लाइबिलिटी बैलेंस Account group, आउटपुट टैक्स आउटपुट टैक्स दिख रहा है आपको? नहीं सर ओके, न्यू स्क्रीन पे जाओ एंड चेक कि आपके अकाउंट ग्रुप में ये अकाउंट ग्रुप डिफाइंड है या नहीं। ट्रांजैक्शन कोड OB40, I'm sorry, not OB40, OBD4 है ना yes, OBD4. Chart of account is HNMO. अब यहाँ पे लेट अस सी कि हमने आउटपुट टैक्स के लिए अकाउंट ग्रुप क्या डिफाइन किया है। फाइंड ऑल, दिस इज वेंडर अकाउंट्स, ओके। ये सारे हमने अकाउंट ग्रुप्स डिफाइन किए थे। लाइबिलिटीज में टैक्स पेबल, ऑलराइट, 2510। लेट अस सी कि यहाँ पे हमें टैक्स पेबल दिख रहा है या नहीं। दिस इज टैक्स पेबल 2510। टैक्स पेबल इज द आउटपुट टैक्स। अब शॉर्ट टेक्स्ट वी विल गिव आउटपुट टैक्स और आउटपुट CGST 9%। लॉन्ग टेक्स्ट में भी आउटपुट CGST 9%। Go to control data, tax category. This is output tax, posting without tax allowed. Click on open item management because इस टैक्स अकाउंट को हमें आगे जाके सेटल करना होगा। तो ये जो टैक्स अकाउंट्स है दिस विल रिमेन ओपन। गो टू क्रिएट बैंक इंटरेस्ट G001, सेव। वी डिड नॉट गिव पोस्टिंग डेट। हमने यहाँ पे सॉर्ट की नहीं दी थी। सॉर्ट की इज 001, पोस्टिंग डेट। यहाँ पे मल्टीपल सॉर्ट कीज है। You can choose posting date, document number, document date. This will be as per the requirements. अभी के लिए हम posting date select कर रहे हैं and save it.
आउटपुट CGST 9% हमने क्रिएट किया. Now we will create output CGST 6%. Copy this. We are copying from 25 all zeros to 25 all zeros 1. Enter. Description, change it from 9% to 6%. Save. Again copy. 25 all zeros 2. Continue. From 6% to 20%. Again save. आउटपुट CGST के लिए हमने 3 GL अकाउंट्स क्रिएट किया. Now let us create for SGST. Copy. अब SGST के लिए हमने नंबर रेंज डिफाइन की थी 25 ऑल जीरोस 10 से. SGST के लिए we define 25 all zeros 10 to 25 1 all zeros 19. So 251 all zeros 10. Continue. This is SGST and save. Again इसको कॉपी करूं. 11. This is 6%. This is also 6%. And save. Again copy. 12. This is 20% and 20%. Again save. अब अगर आप देखो, for 9% the account is ending with the number 0. For 6% it is ending with the number 1. For 20% it is ending with the number 2. SGST के लिए भी same logic follow हो रहा है 0 1 2. If you want to create IGST and UGST, उसके लिए भी आप same logic follow करोगे. Clear है इतना? Yes, sir. Okay. Go back to transaction code OB40 जहाँ पे हमें टैक्स कोड्स एंड GL अकाउंट्स असाइन करने हैं. नाउ E1 टैक्स कोड. ओके, फर्स्ट थिंग, जब हम यहाँ पर सॉरी, जब हम इस ट्रांजैक्शन में टैक्स कोड एंड अकाउंट्स को असाइन करेंगे, तो दिस विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस प्लस टैक्स कोड प्लस GL अकाउंट. अब ट्रांजैक्शंस वर दिस. टैक्स कोड हमने डिफाइन किया था एंड इस टैक्स कोड में हमने ऑलरेडी SAP को डिफाइन किया है कि स्पेसिफिक टैक्स कोड्स के लिए कितना टैक्स परसेंटेज होना चाहिए. राइट, फॉर E1 हमने 9% CGST 9% SGST किया था. E2 के लिए हमने 6% CGST 6% SGST किया था एंड E3 के लिए 20-20 किया था CGST प्लस SGST. नाउ फॉर YOC, लेट्स से हम टैक्स कोड क्रिएट कर रहे हैं E1. For this E1, the GL account is 251 all zeros. This is for CGST. SGST के लिए भी हम
ट्रांजैक्शन कोड E1 यूज कर रहे हैं एंड जीएल अकाउंट अपडेट होना चाहिए 251 ऑल जीरोस 11. I'm sorry, not 11, 10. This will be 9%. This will be 9%. Correct? यस सर। Okay. अब ये सेम चीज हम एसएपी में भी डिफाइन कर रहे हैं. If you see the transaction, this is YOC, meaning ये CGST के लिए है for the sales. अब एसएपी को हम ये बोल रहे हैं कि CGST में for E1 टैक्स कोड जीएल अकाउंट अपडेट होना चाहिए 251 all zeros. For E2 टैक्स कोड जीएल अकाउंट अपडेट होना चाहिए which is 251 all zeros 1. एंड E3 के लिए 251 all zeros 2. Okay. CGST for 9%, CGST for 6%, CGST for 20%. Save this. Similar pattern हम SGST के लिए अप्लाई करेंगे. Go back. YOI is, this is for IGST. YOS is for SGST. Double click, click on tax code and save. Tax code is E1, E2, E3. अब यहाँ पे GL account is 251 all zeros 10 for 9%, 251 all zeros 11 for 6%, 251 all zeros 12 for 20%. Enter and save. समझ आ गया इतना? हाँ सर। ओके. अब हम फिर से कस्टमर इनवॉइस पे जाते हैं. दिस इज आवर कस्टमर इनवॉइस. एंटर करने के बाद ये सारी फील्ड्स एडिटेबल हो गए. क्लिक ऑन सिम्युलेट. इट इज शोइंग दिस एरर अगेन /NFB70. हम फिर से सेम ट्रांजैक्शन कोड में आ रहे हैं. कस्टमर इज 800301. Calculate tax is लास्ट टाइम हमें एरर दिखा रहा था कि जीएल अकाउंट 301 ऑल जीरोस इज नॉट रेलिवेंट फॉर टैक्स. अब यहाँ पे एरर आ रहा है कि इट इज रेलिवेंट फॉर टैक्स बिकॉज हमने टैक्स टाइप डिफाइन किया था जीएल मास्टर डेटा में. नाउ लेट्स सी वी आर अप्लाइंग 6% SGST, 6% CGST. This is E2. Press enter and simulate. Transaction key YOI, chart of accounts HNMO not defined. अब YOI is for output IGST. So let us create a GL account for IGST. मेन सर ये तीन ही टैक्स होते हैं ना अपना, CGST, SGST और आई। Yes. यूनियन टेरिटरी वाला तो अपन इतना यूज नहीं करते ना फिलहाल तो। यूनियन टेरिटरीज में अगर ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं तो वहां पे यूजीएसटी यूज करते हैं. अब
हम पुणे या मुंबई में अगर रह रहे हैं तो मोस्टली वी विल बी यूजिंग SGST, CGST एंड इंटरस्टेट के लिए IGST. I just Okay, where is it? Tax payable. Let us create an account for IGST. Copy this. IGST के लिए we have the number 20 to 29. 20. This is output IGST for 18%. Save. बाकी सारी चीजें सेम रहेगी. Again, copy this to 1. This is for 12%. Save. Copy. 2. 2. This is for 20%. And save. Go to transaction OB40 again. Back. यहाँ पे in transaction YOI, double click on it, click on tax code and save. अब let's say IGST के लिए हम tax code लेते हैं. Let's say it is I1, I2 and I3. Okay, I stands for IGST. Go to SAP. टैक्स कोड्स हम कौन से ट्रांजैक्शन में क्रिएट करते हैं? कौन से ट्रांजैक्शन कोड में क्रिएट करते हैं? why I see नहीं, दैट इज ट्रांजैक्शन. जो हम कमांड बॉक्स में ट्रांजैक्शन कोड डालते हैं, दैट इज FTXP. ओके, /n FTXP. यहाँ पर हम टैक्स कोड्स क्रिएट करते हैं. एंटर. कंट्री इंडिया. लेट अस क्रिएट. फर्स्ट चेक करो कि ऑलरेडी I1, I2 एंड I3 क्रिएटेड है या नहीं. ओके, C, D, E एंड डायरेक्टली J. लेटर I से कोई ट्रांजैक्शन कोड्स क्रिएटेड नहीं है यहाँ पे. सॉरी, टैक्स कोड्स क्रिएटेड नहीं है यहाँ पे. सो लेट अस क्रिएट I1. एंटर. दिस इज आउटपुट टैक्स IGST 18%. I'll copy this. Tax type A. Click on continue. अब यहाँ पर इन IGST सेल्स हम 18% दे रहे हैं. एंटर एंड सेव. क्रिएट I2. एंटर. आउटपुट टैक्स फॉर IGST 12%. आउटपुट टैक्स अगेन. कंटिन्यू एंड यहाँ पे गिव 12. सेव. I3. आउटपुट टैक्स फॉर IGST, दिस इज 40%. ओके, 3 टैक्स कोड हमने क्रिएट किए. 3 GL अकाउंट्स भी हमने क्रिएट किए थे IGST के लिए.
लेट अस जस्ट हम सिर्फ यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं व्हाट टैक्स कोड्स वी क्रिएटेड फॉर विच टैक्स टाइप्स. This is for CGST plus SGST. This is for IGST. अब टैक्स कोड्स को हम GL अकाउंट्स के साथ मैप करते हैं, लिंक करते हैं. Go back to transaction OB40 slash N. I'll just change this. I'll change this tax payable to output tax slash N OB40. अब यहाँ पे let us search for YOI. Tax code is I1, I2 and I3. For this GL account, let's see what is the GL account. Output tax IGST. GL account is 251 all zeros 20. 251 all zeros 21. 251 all zeros 22. Save. Back to customer invoice. Enter and simulate FP70. Why is it showing this again? Okay. Your options has been activated. Simulate. Let us check कि ये जो कस्टमर है हमने करेक्ट सिलेक्ट किया है या नहीं. Let us select 800300. Account has been changed. Okay. Again, transaction key YOI, chart of account HNMO, not defined. Why it is showing this? Exit FP70. This is
No tax account has been defined for tax code. For the specified account key, maintain the accounts to which a tax posting is to be made using the tax code enter. You find this within financial accounting. Okay. Posting corresponding transaction key. We have already defined it. Go back in CGST for sales. हमने ऑलरेडी जीएल अकाउंट्स डिफाइन किए हैं. Let us check with this part once. SPRO, SAP reference IMG, financial accounting global settings, tax on sales and purchase, and postings. Define tax accounts. Let's see. Click on define tax accounts. Transaction YOC. Okay. It is giving error for YOI. हम वो चेक करते हैं पहले. Rules. These indicators are ticked. HNMO accounts. ऑलरेडी यहाँ पर जीएल अकाउंट्स डिफाइन किए हुए हैं. I1 is for output IGST 18%. I2 is for output IGST 12%, and I3 is for output IGST 20%. Save. Go back to customer invoice. Slash NFB70 800300. Calculate tax. E2. This is again 12%. Transaction key YOI. Chart of accounts HNMO. Not defined in T030K. Go to SE16N T030K. Chart of accounts HNMO. Execute. We have defined the GL accounts.
ये एरर नहीं आना चाहिए था एक्चुअली. Let us close this. Close all the tabs. Yes. FB70. Select E6. I'm sorry. Select E2 for 6% CGST and SGST. Let us check with some other tax code. /N FB70. Calculate tax. इस बार हम E1 select करते हैं. This is 18%. अब जब आपको एरर आने स्टार्ट हो जाते हैं तो दैट इज वेयर द एक्चुअल वर्क स्टार्ट फॉर अ कंसल्टेंट. जब भी एंड यूजर्स को कोई एरर आएगा या एंड यूजर को कोई प्रॉब्लम आएगा तो वो लोग टिकट रेज करते हैं एंड यू हैव टू रिजॉल्व देयर एरर. Okay. दिस वाज डोमेस्टिक सेल्स फॉर आगरा. See, this is getting simulated. Our accounting entry is BU Bhandari, which is our customer account debit for 11,200. Domestic sales Agra account credit for 9,491. Output sales, I'm sorry, output CGST 9% and output SGST 9%. Let's see कि ये calculation correct है या नहीं. Our total invoice amount, it was 11,200. Now out of this 11,200, if we want to calculate the tax, 11,200 into 100 divided by 118. This is 9,491. SAP में भी it is 9,491. Now 11,200 minus 9,491. This is 1,709.
1709 divided by 2, 854. This is also 854. यानी कि जो टैक्स कैलकुलेशन हो रहा है दैट इज करेक्ट. लेट अस पोस्ट दिस. फर्स्ट गो टू FPL3N. अब यहाँ पे हमने आउटपुट टैक्स के लिए कोई वैल्यू अब तक एंटर नहीं की है, कोई इनवॉइस अब तक हमने सेल्स के लिए पोस्ट नहीं किया है फॉर द टैक्सेस. सो इफ आई सिलेक्ट दीज अकाउंट्स, अभी हमने आउटपुट CGST 9%, आउटपुट SGST 9%, इन दो अकाउंट्स में एंट्री की है. करेक्ट. टैक्स के लिए ये दो अकाउंट्स अपडेट होंगे. करेक्ट है या रॉन्ग है? ये सर करेक्ट है। आपको तो दो ही तो ये किए थे, CGST और HGST। ओके. इफ आई एग्जीक्यूट, नो आइटम सिलेक्टेड, यानी कि इसमें कोई बैलेंसेस नहीं है अब तक, बिकॉज हमने कस्टमर इनवॉइस अब तक पोस्ट नहीं किया. यस। 1 second. Now we will go back. FPL3N. अब while posting customer invoice, चार अकाउंट्स अपडेट हो रहे हैं. फर्स्ट इज accounts receivable, which is a customer account. Second is sales account. Third and fourth are tax accounts. एंड जब हम पेमेंट करेंगे तब और एक अकाउंट ऐड हो जाएगा विच इज फॉर पेमेंट, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट. सो FPL3N में वी विल सिलेक्ट ऑल दीज अकाउंट्स. 251 all zeros, 251 all zeros 11. Then for 1 second, Rishikesh. Okay. सेल्स के लिए we will use this domestic sales Agra and accounts receivable account. Copy all items and execute. आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, आ रही है। अब यहाँ पे अकाउंट्स रिसीवेबल, ऑल लाइन आइटम्स आर क्लियर्ड. सेल्स में भी सारी लाइन आइटम्स क्लियर्ड है. आउटपुट टैक्स का हमें अकाउंट नहीं दिख रहा है बिकॉज कोई एंट्रीज नहीं हुए उसमें. What is this for? अब हम कस्टमर इनवॉइस पोस्ट करते हैं. डॉक्यूमेंट 10,003 was posted. Let us note down the invoice number. This is 10,003. लाइन आइटम डिस्प्ले में जाओ फिर से. लिस्ट रिफ्रेश. ओके, ओपन आइटम्स ऐड हो गए. फर्स्ट इज कस्टमर इनवॉइस फॉर
₹11,200 डेबिट, टैक्स कोड यहाँ पे दिख रहा है विच इज E1, and this is our document number 10,003 and the supplier number. I'm sorry, the customer number. Next is output tax, amount 854, tax code E1. Sales account में we have 9,491 which is cleared. Again tax code यहाँ पे दिख रहा है. This is CGST for output tax. Okay, 251, all zeros 10. Okay, output tax 9%, amount 854, tax code E1, and output SGST 9%, amount 854, tax code E1. अब ये सारे अकाउंट्स यहाँ पे अपडेट हो गए आफ्टर पोस्टिंग द कस्टमर इनवॉइस विथ टैक्स. अब हम उस इनवॉइस के लिए इनकमिंग पेमेंट करते हैं. ट्रांजैक्शन कोड फॉर इनकमिंग पेमेंट इज F-28. एंटर. इनवॉइस डेट, लेट्स से आज की डेट देते हैं हम 04/10/2025. क्लियरिंग टेक्स्ट, कस्टमर पेमेंट received. This is again with tax. Bank, we are using 11 all zeros. यहाँ पे अब पेमेंट अगर रिसीव होगा तो कितना पेमेंट रिसीव होना चाहिए? आर इनवॉइस वाज. टैक्स का अमाउंट रिसीव होना चाहिए सर वहाँ पे. आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, लो है. उसमें सर आप पूरा अमाउंट रिसीव होना चाहिए ना, पूरा टैक्स अमाउंट होना प्लस चाहिए. वो. करेक्ट. अब द अमाउंट विच वी एंटर्ड इज 11,200. तो जो पेमेंट रिसीव होगा दैट विल ऑल्सो बी ₹11,200. अब किस कस्टमर से हमें ये अमाउंट रिसीव हो रही है? वी रिसीव इट फ्रॉम 80300 which is BO Bhandari. बीओ भंडारी. प्रोसेस ओपन आइटम्स. अब यहाँ पे एक लाइन आइटम दिख रहा है हमें. डिफरेंस इज 0. वी कैन सिमुलेट दिस. अब अगर सॉरी, दिस इज ओवरव्यू नॉट सिमुलेट. ओवरव्यू वाला आइकॉन अगर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे एक ही लाइन दिखेगी. अगर आपको दोनों लाइंस देखने हैं, गो टू डॉक्यूमेंट, सिमुलेट जनरल लेजर. सी 40 is debit, 15 is credit for customer. So कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट क्रेडिट. अब हमारे पास यहाँ पर बैंक अकाउंट क्रिएटेड नहीं था इस कंपनी कोड में, इसलिए हमने कैश अकाउंट लिया है. ओके, अगर आप बैंक सेलेक्ट करोगे तो इट विल बी बैंक अकाउंट. ओके सर. ओके, गो बैक, लेट अस पोस्ट. डॉक्यूमेंट 8008 was posted. This was 10,003. Payment document is 8008. फिर से लाइन आइटम डिस्प्ले पे जाओ. अब यहाँ पे अकाउंट्स रिसीवेबल, आउटपुट
टैक्सेस, ये 3 अकाउंट्स ओपन है, राइट? इन 3 अकाउंट्स में वी हैव लाइन आइटम्स जिनके स्टेटस ओपन दिख रहे हैं। लेट अस क्लिक ऑन रिफ्रेश। अकाउंट्स रिसीवेबल डोमेस्टिक में कस्टमर इनवॉइस एंड कस्टमर पेमेंट, ये दोनों लाइन आइटम्स क्लियर है अभी, राइट? दिस इज 11,200 डेबिट, 11,200 क्रेडिट, प्लस माइनस इज इक्वल्स टू 0। आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी के लिए हमने ओपन आइटम मैनेजमेंट सिलेक्ट किया था, तो ये जो लाइन आइटम्स है दैट विल रिमेन ओपन। जब हम इसका सेटलमेंट कर लेंगे तब हम इन लाइन आइटम्स को क्लियर कर सकते हैं। एंड डोमेस्टिक सेल्स फॉर आगरा, दिस अकाउंट इज ऑलरेडी क्लियर्ड। ओके सर। ठीक है, दिस वाज टैक्स। नाउ इमीडिएटली आफ्टर द टैक्स we will move on to the next topic. I'll just stop this recording.